Welcome back, guys. अब हम करेंगे pressure question 14 paper 2 5054. Let's start. Question 14. Figure 2.1 shows a student sitting on a chair. The student sitting on a chair उसके बाद tilt back करता है थोड़ा सा. Figure 2.2 shows the same student with this chair tilted. तो वो अपने आप को थोड़ा सा tilt कर लेता है पीछे को. We all do. State and explain how the pressure of the chair on the floor differs in the two positions. Pressure is dependent on area and force. Pressure is equals to force divided by area, right? या तो फोर्स भरा हो जाए या एरिया कम हो जाए. अच्छा, जो स्टूडेंट है ना, लेट्स अज्यूम उसका जो वेट है दैट इज द सेम विच इज 600 न्यूटन्स. 600 न्यूटन्स वेट है और एक चेयर के लेग का एरिया जो है दैट इज 0.05 मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. तो चार लेग्स का एरिया कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 0.2 मीटर स्क्वायर. तो 600 into 0.2 divided by 0.2 will give us 3000 pascals of pressure. This is just an example. ठीक है ना. अभी मैंने आपको एक दिया हुआ एग्जांपल वेयर वन legs area is 0.05 मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. अब अब स्टूडेंट ने क्या किया? ही हैज टिल्टेड बैकवर्ड्स एंड अपना जो सारा वजन है ना, सारा वेट है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट इज ओनली ऑन टू लेग्स, राइट? तो एरिया कम हो गया. तो अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि जब द स्टूडेंट इज ओनली ऑन टू लेग्स कितना प्रेशर बनेगा? तो उसका वेट तो सेम है. while ऑन द अदर हैंड जो प्रेशर है, आई मीन जो एरिया है, द एरिया हैज रिड्यूस्ड और सिर्फ दो लेग्स पे उसका सारा वजन एक्ट कर रहा है. वन लेग इज 0.05, टू लेग्स विल बी 0.1. So that will give us 600 into 0.1, which is divided by 0.1, sorry. Divided by 0.1, which is 6000, I think. 6000 Pascal. So this automatically proves कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा because the pressure will be divided between the legs. While on the other hand, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा. So that proves that 1514. वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैं इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है. अच्छा, ग्रेटर प्रेशर इन फिगर 2.2, स्मॉलर एरिया इन कांटेक्ट इन फिगर 2.2 और मोर फोर्स थ्रू द बैक लेग्स. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और प्रेशर इज. अच्छा, अब आपने ये याद रखना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एज द प्रेशर विल इंक्रीज द एरिया विल हैव टू डिक्रीज व्हेन द फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है ना. 15 फिगर 2.1 shows a can of compressed air that is being used to blow dust off a computer keyboard. The pressure of air inside the can is greater than the pressure of atmosphere, of course. State what is meant by the term pressure. Pressure is equals to force divided by area. Very simple. Force per unit area, force divided by area. You can write anything. Explain in terms of molecules why the pressure of the air inside the can decreases as it is used. अच्छा, अब आप ये इमेजिन करें, दिस इज अ कैन और ये उस कैन का मुंह है और इधर से उसका गैस निकल रही है, एयर निकल रही है. ठीक है ना. कैन के अंदर इनिशियली बिफोर यूजिंग द कैन हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पार्टिकल्स. बट एज द कैन इज स्प्रेड उसके अंदर से पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं, राइट? तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर एस्केपिंग आउटवर्ड्स और जो अंदर उन्होंने प्रेशर मेंटेन किया हुआ था बाय हिटिंग द कंटेनर, वो कंटेनर को हिट कर रहे थे ना अंदर से. although they won't stop hitting the container, the mass of the gas inside the container will decrease
और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑफ द पार्टिकल्स, लेस पार्टिकल्स विल हिट द कंटेनर इनसाइड, राइट? कम पार्टिकल्स हिट करेंगे द कंटेनर को, and when less particles will hit the container, the pressure inside the, what do you call it, can will decrease. अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं. Particles are escaping the what do you call it, the can, right? And the when the particles escape the can, what happens is कि जो अंदर particles ने अपना pressure maintain किया हुआ था air particles ने, by hitting the container, that will reduce because there will be less particles which are going to hit the container. So that is the answer. Fewer molecules or less gas or more space further apart. अगर fewer molecules होंगे और same volume होगा, so of course there will be less mass. And they will be more further apart, less frequent collisions, less force exerted on the walls. As simple as that. आगे देख लेते हैं. B. A student uses an inverted measuring cylinder in a water trough to measure the volume that the air occupies at atmospheric pressure. So this is used to measure the volume that the air occupies at atmospheric pressure. Atmospheric pressure पे कितनी air occupy हो रही है. Initially the inverted measuring cylinder is full of water. Initially this was full of water, but the student presses the top of the can and air passes through the rubber tubing into the inverted measuring cylinder. ऊपर जा रही है air. The air gradually replaces the water in the cylinder. Water escape कर रहा है and air is replacing the water until no more air can leave the can. मतलब air inside the can has been finished. The final temperature of the air is equal to the initial temperature. अच्छा, they are probably telling us to use the formula P1 V1 is equals to P2 V2 because that formula requires us to have a constant temperature and a constant mass. So yeah, the volume of the air inside the can is 1.8 into 10 raised to the power of minus 4 meter cube. This is the final volume. I mean the initial volume. The student observes that at an atmospheric pressure of 1.0 into 10 raised to the power of 5 pascals, the total volume of the air in the measuring cylinder, the can and the tubing is now 9.4 into 10 raised to the power of minus 4 meter square cube. I mean meter cube, yeah, my bad. So they are telling us to use the formula P1 V1 is equals to P2 V2. The V2 will be this. I mean V2 will be this, P2 will be this, and V1 will be this. So we have to calculate P1. P1 V1 is equals to P2, which is 100,000. Actually, let's just use that. 1 into 10 raised to the power of 10 raised to the power of 5 into 9.4 into 10 raised to the power of minus 4. तो अब देख लेते हैं हम लोग आंसर. V1 हमें दिया हुआ है, V1 हमें दिया हुआ है 1.8 into 10 raised to the power of minus 4 है. 1.8 into 10 raised to the power minus 4. Let's check if this calculations we have made is correct. तो we were correct. P2 V2 हमें मिला हुआ है और V1 हमें मिला हुआ है. So exactly like they said, 100,000 will be multiplied by 9.4 into 10 raised to the power of minus 4, like we just did here. And since 1.8 into 10 raised to the power of minus 4 is multiplying here, it will divide here. ठीक है ना, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. And then we'll get the answer 5.2 into 10 raised to the power of 5 pascals. That is the answer. Very simple question.
Even though it's a bit lengthy, still भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना का मुश्किल हो सकता है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. मेन चीज जो है ना, उसने आपने ना आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है. अगर आपने ये वाला प्रेशर ले लिया और ये वाला वॉल्यूम ले लिया, देन यू गेट रॉन्ग आंसर, राइट. You have to identify which two values are paired and जो दूसरी वैल्यू का मिसिंग पार्ट है वो हमने कैसे ढूंढना है. इन दिस केस P2 V2 was this and V1 is this. So we can easily calculate what P1 was. So yeah, that is it for the video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.